प्रथम गोटे डिबेटेबल इश्यू को आसबि कलिंग रेजिमेंट बिजु बाबूंकर गोटे बड़ स्वप्न थिला आज भी अधूरा ताकू नहीं कौन कह बहुत रेजिमेंट पाई एबे डिमांड्स आछि बहुत स्टेट्स रु डिमांड आसी या पूर्वर भी ये क्वेश्चन मते पचरा जाइथिला किंतु इन दी प्रेजेंट टाइम मु जते दूर जाने कौन सी प्रकार न्यू रेजिमेंट का प्रपोजल नहीं वेरी रिसेंटली आप जानी थे गोटे गुजर रेजिमेंट पाई भी मूवमेंट आरंभ होता ता पूर्वर एमती बहुत प्रदेश माने डिमांड करुँच रेजिमेंट पाई किंतु आजिका दिन में कौन सी इंडियन आर्मी एक्सपेंशन रो प्लान नहीं किंतु आमे माने धीरे धीरे ए सब मैन पावर रिड्यूस करचु सिंस इंडिपेंडेंस खाली गोटे रेजिमेंट तैयारी दैट वाज नागा रेजिमेंट तार खाली 2टा बटालियन नहीं पारला से एबे जो माने सब रिक्रूट होचंती बिहार रेजिमेंट रे सब जाक ओडिया भाई माने जो माने आर्मी रे आछंती आइदर से माने इन्फेंट्री माने जो इन्फेंट्री ऑफ जवान माने बिहार रेजिमेंट को जाउछंती आउ अन्य अदर आर्म्स एंड सर्विसेज सेमिति कौन सी प्रकार रेजिमेंट नहीं सर the first journalist in India who has covered the entire India-China border from Tawang to Jamthang, Bhutan border, Galwan. Jodi apan dekhibe the way China developed their border territories, India is little back. What is the reason? Most important reason hela amara difficult terrain. जेहेतु कि they are already on a plateau. आमे माने हेलु foothills road and the altitude that we are climbing is from mean sea level to 5,000 to 6,000 meters. सेतिपाई आमर जो terrain टा that does not lend itself to fast construction of infrastructure. सेतिपाई roads गुड़ा का बहुत समय लगे और एगुड़ा young mountains सेतिपाई बहुत landslides करके हुए. That is the reason we have not been able to carry out the infrastructure development at a fast pace. सर जदि आपण देखिबे ताहले गलवान इंसिडेंट बहुत दिन चली गलानी लास्टली एवं फाइनली चाइना एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट एंड द डेथ ऑफ देयर सोल्जर्स ताकू नहीं सर कौन कहिबे गलवान इज ऑलरेडी ओवर आवर आर्मी has done a tremendous job in that. We have lost our soldiers and similarly even PLA has also lost their soldiers. But right now we are trying to resolve all the disputed areas through talks. So talks are continuing and we've already had, if I correctly recall, 16 rounds of talks so far. And it is not that every round of talk is leading to some kind of a conclusion, but it is a very continuous process and there will be more rounds of talks, but the entire thing is being handled very maturely without raising the ante or upping the ante. सर आपण निजे ओडिया आर्मी रे एते टॉप पोजीशन को जाइछंती जने गोटे अनसंग हीरोज अछंती बैटल रा मु आपण को फोटो संगे देखेबी बैटल न्यू क्वामडंग सेठी मु देखितिली से वार मेमोरियल रे जने ओडिया शहीद होइतिले 1962 162 वार रे पीके दास एमती बहुत ओडिया अछंती तांकु नै आपण को मन रे किछि स्वप्न रही छि बैटल ऑफ न्यूकमाडोंग इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज सेठी मु ब्रिगेड भी कमांड करतिली आउ सेमिति बहुत आमर अनसंग हीरोज अछंती ओडिसा रु यस तांको पई बहुत किछि करिबा को अछि आउ व्हाट वी कैन डू इज टू लुक फॉर द फैमिलीज एंड एंश्योर दैट एज अ सोसाइटी आमे माने समते ओडिया भाई भौणी माने वी हैव टू सपोर्ट देम and that is how we will get connected with the entire nation. Just last two questions I want to ask. I don't want to take your more time. Tell me sir one thing. वर्तमान जो सिचुएशन अच्छी रशिया यूक्रेन रो वार को नहीं आउ चाइना इंडिया रो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को नहीं ताकू सर कौन कहिबे वेरी स्पेसिफिकली कौन व्हाट यू वांट टू से it's a very complex situation. Today most of the situations are governed by economics and the world affairs. We cannot see two countries as bilateral issues. Everything is a multilateral and global issue. So, एमिति देखिया गले, this is a issue-based subject, and the war is between two nations.
neither NATO nor US nor any other country has jumped into the bandwagon because of the economic issues. While the UNA is trying to play its role, but India at present is doing the correct thing of following a line of neutrality, and they have got a principled stand. And I appreciate it that the manner in which we are going about in our diplomatic stand, it will bear fruit. Because in any case, in the due course of time, we cannot take sides because both the sides have their pluses and minuses. And both the countries, that is, whether it is Ukraine or Russia or US or China, all of them are observing it very closely. But other than two countries, no other country has gone to war in this particular war. Sir, what will be your message for the upcoming Odia youths, those who are coming to the army? There is no dearth of opportunities. खाली हमको देखिबा को पड़िबो कि how to go about preparing yourself for the army as a career option. This is the best way we can serve the nation, to my mind. There are many other arenas where every youth of today can contribute to the nation building, but this is one of the most noble professions that they can join. But they can't just merely jump into the bandwagon. They have to prepare themselves, prepare for the written examinations, service selection board, medical examination, then only they will be able to join the army. Sir, मोर गोटे रिक्वेस्ट होची जे ओडिया यूथ माने बहुत चाहूचंती आर्मी रे आसिया पाई बा मिलिटरी रे आसिया पाई इवन टेरिटोरियल आर्मी रे रिटायर्ड लाइफ रो जो अवसर जीवन रे आई रिक्वेस्ट यू जे काइंडली डू समथिंग फॉर द ओडिया यूथ्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम एटलीस्ट जॉइन इन द टेरिटोरियल आर्मी. निश्चय मोर से कंट्रीब्यूशन रहिबो मु देखुची कोन आमे आगे करि परिबा. Why only territorial army? Regular army पाई भी जदि आमे ट्रेनिंग एस्टाब्लिशमेंट तैयारी करि परिबा, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग एस्टाब्लिशमेंट ओडिशा भितरे आमे अधिकरु अधिकतम ओडिया पिला मानकु सेति पाई आमे प्रिपेयर करि परिबा. और खाली कहबी नै कि फॉर द मेन आई विल आल्सो से कि लेट अस आल्सो एनकरेज आवर वुमेन टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस. देखुले जहाँ गोटे बड़ भल वार्ता देइछन्ती प्रतिटी ओडिया पाई अवसर जीवन रे वर्तमान टेरिटोरियल आर्मी केवल नुहे रेगुलर आर्मी रे केमती बेसी ओडिया युवक आसी पारिबे ताकु नै स्वप्न देखुचन्ती लेफ्टिनेंट जनरल सीपी महांती. नुआदिल्ली कैमरामैन प्रदीप सहित विभूति पतिंग रिपोर्ट नंदीघोष टीवी.